Hello students, myself Sundeep Tyagi, your economics teacher. Today we are going to explain you one of the chapter of your microeconomics, that is theory of demand. Theory of demand, here demand means what? Demand, whenever we go to the market, we purchase something or we want to buy something, but we haven't purchased it. So it would not be deemed as a demand because the good has not been sold in the market. Here demand means what the producer will produce, and producer will produce those goods which he has sold. So on the basis of that assumption only, he will produce the quantity of those goods. So when do we say that there is demand? Demand means the desire. We want three things. We require three things to make a demand. The first one is the desire to purchase a good. Desire to purchase a good. Without desire, there won't be a demand. But now the question is that can demand exist only if we desire? Suppose I want an aeroplane, but I don't have enough money in my pocket. So that won't be demand. So again, second thing, the desire to buy a good accompanied with sufficient purchasing power. I must have that amount of money to buy that product. Whatever I am desiring to buy, I should have the amount to buy that good. Now, again one more question. I have a desire. I have sufficient money in my pocket to buy that good. So would it be demand? Suppose I went to the market. I asked the shopkeeper to give me a mobile. The cost is 25,000. So I have money to buy that phone, but I don't want to spend the money in my pocket. That means I don't have desire. So demand will be completed only when there would be three things. First, the desire to buy a good, then sufficient purchasing power. I must have that amount to buy that good, and I must be willing to spend the money. So there are three characteristics which make a demand. First, desire to buy a good. Second, sufficient purchasing power, that means money in my pocket. And third one, my willingness to spend the money. मेरी इच्छा सामान लेने की, उसके बाद मेरे जेब में वो पैसा हो उस सामान की जो कीमत है, और तीसरा उस पैसे को मैं खर्च करने की विलिंगनेस रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ. अगर मैं इच्छा नहीं रखता, जेब में पैसा भी है, लेना भी चाहता हूँ, पैसा नहीं खर्च करना चाहता, तो डिमांड नहीं होगी. अब सेकंड बात, पैसा है, खर्च भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस गुड को लेना नहीं चाहता, तो भी डिमांड नहीं होगी. डिमांड डिज़ायर है, विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, लेकिन पैसे ही नहीं है, तो भी डिमांड नहीं होती. सो डिमांड बाजार में जब होती है जब हम किसी सामान को खरीद लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ when the purchasing process is complete, only then there would be demand. Now our second point is, what are the factors on which demand of a good depend. हम किसी सामान को ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, उनको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, या ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स. इनको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं. सो फैक्टर्स ऑन विच डिमांड ऑफ अ गुड डिपेंड्स, वेदर वी वुड बाय मोर or we would buy less, it depends upon these different factors, and that also of individual demand. So the first factor, F4 function, or you can say factor, the first factor is Px. Here Px means price on price of the good.
ऑन प्राइस ऑफ द गुड एंड प्राइस ऑफ द गुड दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। उस सामान को जिसको हम लेना चाहते हैं उसकी खुद की कीमत एक चीज, सेकेंड थिंग किस सामान की कीमत। अब जब हम ये कहते हैं सामान की कीमत तो हो सकता है किसी दूसरे सामान की कीमत, तो इसीलिए यहाँ px का मतलब ऑन प्राइस ऑफ द गुड। सपोज वी वांट टू बाई अ एप्पल, सो px means price of apple. Then we have second thing py, price of related goods. So we have suppose we have this mango. So mango is its related goods. So we will discuss this in detail later on in our next PPT. The third one, y means income of the consumer. Income of the consumer is also one of the factor. अगर हमारी जेब में पैसा होगा तो डिमांड होगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी. Then we have T. Here T means taste and preference. T for taste and preference. यानी हमारा टेस्ट किसी सामान को लेकर, हमें कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं लगती तो हम उसको कम खरीदेंगे, ऐसा भी हो सकता है. बाकी इनको डिटेल में हम नेक्स्ट अपनी पीपीटी में देखेंगे. ई फॉर एक्सपेक्टेशन. अगर हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में उस गुड की डिमांड ज़्यादा हो सकती है या प्राइस ज़्यादा हो सकते हैं तो हम उसको आज खरीद लेते हैं. लगता है कि आगे भविष्य में सोना महंगा होगा तो हम उसको आज खरीद लेंगे. तो ये हमारा फ्यूचर को लेकर किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशंस है. एक्सपेक्टेशन भविष्य को लेकर होता है. सो एक्सपेक्टेशन भी दो तरह की होती हैं. वो सारी चीज़ें भी हम लोग डेप्थ में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे. सो आज के लिए फर्स्ट पार्ट में हमारा यहीं तक डिटर्मिनेंट्स और उनका मीनिंग. इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दिस determinants in detail. Thank you.